Viewers, first we go to the top story tracking right now. Following a stone pelting incident in Nashik, authorities have imposed Section 144 restricting public gatherings and have cut internet services for 24 hours. Police and Rapid Action Force personnel conducted a flag march to maintain order and ensure public safety. That's what we're learning of right now. Big update coming in. Now the situation remains tense as security forces work to prevent any further unrest. That's a big story we're tracking right now, Republic TV viewers. And those details are on your screen about what we can expect next on this story. And as you can clearly see, that Section 144 has been imposed after a stone pelting incident. Those are the visuals coming in of what the situation is looking like on the ground. And we are seeing that the police force has been deployed. The police force has been deployed in this incident. And let's go straight across to my colleague Satya Prakash is joining us live. Satya Prakash, take us through what is happening. Situation is still tense. Security forces have been deployed in critical areas to prevent any further unrest. What is the latest coming in? देखिए शिवांगी, कल जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, कल जिस तरह से हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा उसको लेकर बंद बुलाया था और वहां पर मोर्चा निकाल रहा था, उस समय पत्थरबाजी हुई दोनों की तरफ से, दोनों समुदाय की तरफ से जम के पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी कई लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सिचुएशन को देखते हुए वहां पे 144 धारा लगाई गई है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से स्थिति है अभी भी हालात ठीक नहीं है। फिलहाल वहां पे हर जगह पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों को कहा जा रहा है कि जो अफवाहें न फैलाएं और लोग ज्यादा घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल जो स्थिति है नियंत्रण में है। पुलिस कह रहा है कि पूरी तरह से कल शाम को ही स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हो गया है। फिलहाल कहीं सारी चीजों पे नासिक पुलिस देख रही है और जिस इलाकों में जहां पर ये पत्थरबाजी हुआ है, जहां सिचुएशन खराब है, संवेदनशील इलाका है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। All right. Well, thank you so much for joining us out there, Satya Prakash, with all those details. We will be coming back to you as we are getting more details on the story. And like we are telling you viewers, let's have a quick look at this report where we will tell you what really happened following the incidents of attacks on minority groups in Bangladesh. Protests were being held in various parts of India. In Maharashtra's Nashik, however, the march took an ugly turn after stones were pelted on a protest by Hindu groups. Following the incident, Section 144 has been imposed and security personnel have been deployed to maintain law and order. Take a look at this report to understand the top developments. Section 144 has been imposed in Maharashtra's Nashik area. This after violence broke out. Cars were vandalized. Stones were pelted. The police had to fire tear gas to disperse the crowd. The incident happened after stones were pelted on a protest organized by Hindu groups over the atrocities against minorities in Bangladesh. Many people are reported to have sustained injuries. Police forces have been deployed in the region to control the situation. Hindu organizations have been staging protests demanding the safety of Hindus. नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा है। BJP's Nupur Sharma called for an end to genocide of Hindus in the neighboring country. Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा. Hindu lives matter. The situation in Bangladesh has turned grim.
What started as an anti-quota movement has turned violent. Public properties have been vandalized. Sheikh Hasina forced to resign as Prime Minister and flee the country. Attack on minorities. While India stands for the minority groups in Bangladesh, will people in Bangladesh stand up for their own? Getting you some big breaking updates coming in. Sabarmati Express has derailed in a block section between Kanpur and Bhimsen station. Fortunately, viewers, no injuries have been reported at the site. Indian Railways has arranged buses to transport passengers safely to Kanpur. Situation is being monitored. Efforts are underway to restore normal rail operations. Those are the visuals coming in. Sabarmati Express has been derailed. Those are the fresh visuals on your screen about the situation on the ground. 20 coaches of train were derailed. Fortunately, viewers, like we just told you, that no injuries have been reported. Let's have a look at this. A report filed by my colleague who's there and will help us understand what the ground reality looks like. Take a look. इस वक्त हम मौजूद हैं साबरमती एक्सप्रेस में। आज सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास इसी ट्रेन का एक सामने बड़ा बोल्ट आने से एक पत्थर आने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और तस्वीरें देखिए, जो लोग उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे, कैसे जो उनके कपड़े हैं, उनका सामान है, वो ट्रेन में पड़ा हुआ दिख रहा है। चूँकि आनन फानन में लोगों ने कैसे भी उतर के ट्रेन रुकने के बाद अपनी जान बचाई है। फिलहाल किसी भी तरह के कैजुअलिटी की बात सामने नहीं आ रही है। कई लोगों के घायल होने की जो सूचना थी वो आई थी, जिसके बाद उसको तुरंत जो उपचार है उसके लिए भेजा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जब वो ट्रेन में थे उस दौरान कैसे ये हादसा हुआ है। भाई साहब, कितने बजे के तकरीबन ये हादसा हुआ है ट्रेन में? लगभग 2 बजे के करीब। किस तरह की आवाज़ आई थी? क्या आपको उछाल मार, मतलब 1 मिनट उछाल मारी गाड़ी, उसके बाद एक बैग इधर उधर होने लगा है, सब लोग अफरा तफरी में जाने लगे। उसके बाद गाड़ी एक पूरा रुक गई, उसके बाद सब लोग उतर करके इधर उधर अपना उठा करने लगे। अच्छा, आप क्या चोट वोट आई थी किसी को? नहीं, किसी को चोट नहीं आया था। एक आदमी सिर्फ खिड़की से मतलब कूदने, इमरजेंसी कूदने लगे, उन्हीं को थोड़ी चोट आई थी। अच्छा। और किसी को कोई चोट नहीं आया। तो ठीक है, देखिए ये उस वक्त लोग हैं जो ट्रेन में मौजूद थे। और ट्रेन की अगर अभी भी आपको दिखाएं तो देखिए जो ट्रेन की हालत है वो बेंड है, चूँकि इसके एक तरफ के जो पूरी टायर्स थे वो पूरे डिरेल हो चुके हैं। और यही कारण है जिस वजह से जो ट्रेन है वो डिरेल हुई है। और ये साफ तौर पे तस्वीरें आपको जो कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया से दिखा रहे हैं हम, जहाँ पर देखिए ट्रेन किस तरह से जो डिरेल है वो हुई है। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जो टायर्स हैं वो पटरी से उतर चुके हैं। पटरियों ने भी जो मजबूती थी ज़मीन की वो छोड़ दी है, पटरियां भी बाहर आ चुकी हैं। तकरीबन 22 कोचेस थे जो डिरेल हुए हैं। यहाँ से आपको खुद ही तस्वीरें दिख रहे हैं कि कैसे जो ट्रेन है पूरी एक तरफ बेंड है, दिख रही है। ये तस्वीरें देखिए कि साफ़ तौर पर जो ज़मीन, जो पत्थर थे जिनमें पटरियां लगी हुई थी वो तक निकल आए हैं। पटरियां पूरी तरह बेंड हो चुकी हैं और जो ट्रेन के टायर्स हैं वो पटरियों को छोड़ चुके हैं और उस तरफ शिफ्ट होते साफ तौर पर दिख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो क्षतिग्रस्त तस्वीर है वो नज़र आ रही है। क्या आप उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ है? अच्छा, आप थे। क्या उस समय हादसा हुआ था? कैसी आवाज़ आई थी? नहीं, उस समय तो वहाँ से कानपुर चली तो नॉर्मल स्पीड नॉर्मल था जी। तो थोड़ा आगे आया तो और झटका महसूस हुआ। मेरा फ़ोन गिरा ना, जब फ़ोन गिरा तो मैं नींद में ही था। तो फ़ोन गिर गया, इधर मेरे को यहाँ पर लग गया है, पैर मुड़ गया, ऐसे गिर गया मैं। तो सब भाग गए, मैं अकेला। जब मैं गिरा ना, फ़ोन उठाया ना, देख रहा हूँ बोगी में कोई सब भाग चिल्ला रहे हैं सब। ट्रेन अफ्रीका में, हाँ, कोई ऊपर गिर रहा है, कोई उसके ऊपर गिर रहा है। मतलब मैं उधर से बैग छोड़ के जूता छोड़ कैसे कूद गया। मैं देखा, इधर देख रहा हूँ 56 लोग ऐसे कूद गए वो लोग। मतलब स्पीड तो कम था, 20 स्पीड था, लेकिन फिर भी कूद गए वो लोग। फिलहाल ट्रेन के लिए जो रिकवरी ट्रेन है वो आ चुकी है। और जो रेलवे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही जो ट्रेन है उसको रिकवरी ट्रेन के द्वारा जो पटरी है उससे हटाया जाएगा। चूँकि ये लाइन भी अब बंद रहेगी, इसका जो मरम्मत का कार्य है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जारी होगा। कैमरा पर्सन अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर।
Viewers, we told you that for the past few days now there have been protests all across India and different states over the brutal gang rape and murder of a Kolkata doctor. Now, the protests are getting bigger. The Indian Medical Association has called for a 24-hour nationwide withdrawal of non-emergency services starting from 6 a.m. today. This strike is to protest against the alleged rape and murder of a trainee woman doctor at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. IMA's action aims to highlight the severe issues within the healthcare system and demand justice for the victim. So, 24 hours across India, IMA is on a strike. OPD services will remain shut. Doctors are calling for a major hospital shutdown in protest of the Kolkata doctor rape and murder case. The protests and strikes have been happening now, viewers, for the past few days. But this is one of the biggest strikes which has been announced, where a 24-hour strike has been announced all across India. I repeat, all across India. This is coming in, viewers, as the IMA has said the strike will start today, 6 a.m. The strike has already started, 6 a.m. from the morning today itself until 6 a.m. tomorrow, Sunday, August 18th. Let's go straight across to my colleague who's joining us live from our newsroom. A very good morning to you, Samiksha. 6 a.m. onwards, the strike has already begun. If you could take our viewers through which services will not be operational, and it's one of the biggest strikes by IMA and by medical staff which has been announced in many years. That's right, Shivangi. Like you said, the strike has already begun by the Indian Medical Association. Now, let's tell our viewers about the magnitude of this strike. It's said to be the largest strike to have happened in over a decade. So yes, the magnitude of this strike is huge, given that all government and private hospitals across the country will be shut for 24 hours. Shivangi, that being said, let's tell our viewers that emergency services will be operational. So non-critical surgeries will not take place. Other than that, emergency services will continue to take place, and as far as critical surgeries, that will also be operational. But yes, this is a 24-hour strike starting 6 a.m. It has already begun till 6 a.m. tomorrow. Indian Medical Association, that comprises of the private and government hospitals, the IMA is very clear with its demand, maintaining that they want capital punishment for the accused. They want a central law for the protection of the healthcare workers across the country, and yes, compensation for the victims. Shivangi. All right, thank you, Samiksha, for getting us all those details. We'll be covering the story very closely from the ground itself to Samiksha. Our viewers will get all the top updates throughout, as the IMA has called for a mega strike all across the country. Let's move ahead, viewers, to some of the other stories and top headlines that we are tracking. All right, we're getting some more visuals coming in right now, where IMA is a 24-hour strike all across India. And we will be connecting to a lot of our reporters very soon throughout the day as we get you the ground situation. Now, like we told you, that many associations apart from the IMA, the entire medical fraternity is coming out in support of the strike called by the IMA. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Governor C.V. Anand Bose tells Arnab youth scared in Bengal to send a report to Delhi over Kolkata horror and subsequent violence. Head of polls in Jammu and Kashmir, Congress Jammu and Kashmir Chief Vikar Rasul Wani now replaced with Tariq Hamid Kara. Yogi Adityanath to visit Varanasi, hold review meeting on law and order development works now. Mohammad Yunus dials PM Modi. PM says Yunus assured of safety of minorities in Bangladesh. US Secretary of State Blinken to embark on an Israel visit today. Push for Gaza ceasefire. All right, just hours after the announcement of the Jammu and Kashmir Assembly election dates, internal
conflicts within the Congress party have come to the surface in a significant move. The party has removed its Jammu and Kashmir party chief and growing rifts. This development highlights the ongoing challenges and divisions within the party as it prepares for the upcoming polls. That is the big update coming in right now, viewers. On your screen, we can see those top updates coming out. Jammu and Kashmir will witness elections after 10 years. Last assembly election was 10 years ago. And parallelly, viewers, now we are seeing that there seems to be internal conflict within the Congress party, which have come out in the surface. So one more example of infighting within the Congress. Nothing new. We have seen this in the past. In a significant move, the party has removed its Jammu and Kashmir party chief amid growing rifts. I want to go across to my colleague, Gursimran, who's joining us live on the broadcast. Gursimran, very good morning to you. And after Jammu and Kashmir dates have been announced, it's going to be a very big event, of course, Gursimran. You would know that. You've been reporting live from the region for so many years now. But what is happening within the Congress party? Discontent against the party chief Vikas Rasoolwani that led the party leadership to change him. He has been replaced yesterday and was removed from his post, though he has been made a special invitee in the Congress Working Committee. But this shows that the Congress chief, who was elected for a tenure of roughly 5 years, has been removed within 2 years. 2 years of 1 month is the specific time that he has been removed, and now the charge has been given to Tariq Hamid Kara. This has been done for the two reasons. First, that Vikas Rasoolwani was too junior. When he was made as the president of the Congress party, it was seen that he was made because he is close to Ghulam Nabi Azad, and at that time in July 2022, Ghulam Nabi Azad used to have say in the Congress party. But it is roughly 30 to 60 days after Vikas Rasoolwani became the president of the Congress party, Ghulam Nabi Azad left the Congress party to form his own party, but it was Vikas Rasoolwani who stood with the Congress. It was surprise for many of the congressmen within the party also, but with the passage of time, it was a growing discontent because the senior leaders of the party, be it from the Jammu region or from the Kashmir Valley, including the party's General Secretary Ghulam Ahmad Mir, who heads the affairs of Jharkhand, he was not also happy with the performance and the working style of Vikas Rasoolwani, and that's why it was recommended to the party high command when 25 leaders of the Jammu and Kashmir Union Territory met the party high command that it is a high time that Tariq Kara be brought in and Vikas Rasool be replaced. And yesterday, hours after the announcement of the polls, the order was issued. And one more thing is that the Congress is now eyeing on every aspect. First is the president is a Muslim from the Kashmir Valley. That is the card the party wants to play. Second is Raman Bhalla, the working president, a Hindu from the Jammu. That is what they want to dent the BJP in the Hindu heartland. And third is the Tara Chand, who is a SC leader, former deputy chief minister, and has good hold in the SC community. So by going this, the Congress wants to dominate all the communities, but it has to be seen that whether Congress will be able to give a contest to the Bharatiya Janata Party in the Jammu region, because BJP also knows that there is a discontent among people against them. But whether the Congress will be able to cash it, it has to be seen. But for now, the growing discontent against the incumbent chief of the Congress party has led to his removal, and Tariq Hamid Kara is the new Congress chief. Yes. All right, viewers, and thank you, Gursimran, for getting us all those details. I will be coming back to you as we're getting a big development coming in from Jammu and Kashmir. And viewers, like we told you, a significant development for Jammu and Kashmir. The Election Commission of India has outlined the roadmap for the upcoming assembly polls in the region. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar also emphasized the enthusiasm among the local population for participating in the democratic process, highlighting their strong desire for change and engagement. Here's a full report highlighting what can we expect next. The Election Commission of India held a briefing addressing the upcoming polls in Jammu and Kashmir. इलेक्टरल रूल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रूल भी पब्लिश हो जाएगा. So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March.
Rajiv Kumar, the Chief Election Commissioner, also added that the final list of voters is all set to be published on the 20th of August. हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक ललाइक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। Furthermore, the Chief Election Commissioner also touched upon strengthening the layers of democracy in the Jammu and Kashmir Valley. People were there to participate in the elections. The long queue, the shine on their faces were testament to this particular thing. There was a belief over cynicism. There was thriving political participation in entire election. There was intense campaigning. These are the positives, a bit of change in the security scenario also since then. So what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? The Jammu and Kashmir Assembly polls are all set to take place in 3 phases. The first phase will be conducted starting 18 September. Meanwhile, the second and the third phases will be taking place on September 25th and 1st October respectively. The vote counting will take place on the 4th of October. Former member of the Lok Sabha, Omar Abdullah, also addressed the announcements made by the ECI. यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। The announcement comes at a time when the threats posed by Pak sponsor terror loom large over the valley. While security is being ramped up ahead of the assembly polls, J&K looks all set to experience renewed democratic practice in the valley. Viewers, much more coming up. Former principal of RG Kar Medical College in Kolkata apprehended, grilled by CBI team. 8 days on, parents of Abhaya await Justice Mamta protests against own administration. Stay tuned. And viewers, we'll move ahead to the top story tracking right now, which is coming in, and this is a global headline. Amid the escalating tensions in the Middle East, foreign ministers of UK and France met in Israel to discuss ceasefire and hostage deal. David Lammy called the Middle East crisis a dangerous moment for the entire world. Here's a look at this report. As the Israel and Hamas war rages on, efforts are underway to de-escalate the war from expanding. On Friday, the British and French foreign ministers made a joint trip to Israel where they met with Israeli ministers. British Foreign Secretary David Lammy called it a dangerous time for the Middle East. International mediators are also holding talks in Qatar to reach a ceasefire deal. Release of hostages also remain a key topic. We think this is the last chance to bring them home now. While Hamas did not participate in the talks directly, it has accused Israel of adding new demands to a previous proposal.
The war began in October last year following a deadly attack on Israeli army bases and civilians by the Hamas terrorists. Hamas terrorists killed around 1,200 people and abducted over 250. More than 100 of them have been released, but over 100 are still believed to be in Hamas's captivity. P. Shinawatra, the youngest daughter of the former Prime Minister Thaksin Shinawatra, has been elected as the country's new leader with 319 confirmed votes in her favor. She becomes Thailand's third leader from the influential Shinawatra family, following her father's controversial tenure and return from exile last year. Here's a look at this report. As the parliamentary elections in Thailand conclude, Paetongtarn Shinawatra, daughter of the former leader Thaksin Shinawatra, has been elected. Right now, of course, today I feel very honored and I feel very happy to do my best in every day and in every opportunities that I have. I think that's make me feel like, of course, there's a lot of things going on around me, but if I always do my best and always think about what is happening right now, right here in front of my face, I will be fine. Paetongtarn is now Thailand's third leader from the Shinawatra family, following her father, who was ousted in a coup before returning from exile last year. She secured 319 confirmed votes with 145 against her and 27 abstentions. Paetongtarn was the sole nominee and obtained a majority of the votes in the parliament. This election follows a significant ruling by Thailand's courts which removed the former Prime Minister Srettha Thavisin from office due to an ethical violation. ผมเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยในอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นทำตัวเป็นที่ขัดแย้งของทุกๆคนนะครับก็ The court decision has also disrupted the political landscape, especially after the main opposition party was ordered to dissolve just a week ago. The petition against Srettha was perceived as a move favouring a pro-military political party within his coalition government. The Constitutional Court ruled that Srettha, a real estate tycoon and relative newcomer to politics, had violated ethics rules by appointing a lawyer with a criminal record to his cabinet. As the new Prime Minister was elected at a time of heightened scrutiny and shifts in power dynamics, the country now watches closely on how she will face the pressing issues. Getting some big breaking updates coming in right now on Republic TV viewers. What we're learning is Israeli airstrikes have reportedly eliminated at least 5 Hezbollah terrorists in a couple of areas of southern Lebanon. There are rumors that the strikes specifically targeted Hezbollah commanders. Though details remain unclear, this escalation marks a significant development in the ongoing tensions between Israel and Hezbollah. That's a big update coming in, Republic TV viewers, where we're learning couple of details coming in, where we are seeing that Israel has also issued evacuation orders for northern and southern Gaza. And this is coming in as we are coming to know that Israeli military has bombed a couple of areas. Israeli airstrikes have eliminated at least 5 Hezbollah terrorists in southern Lebanon. Viewers, tensions have escalated as the World Health Organization has declared a global health emergency following a significant outbreak of Mpox. The disease has now been reported in 13 African countries with a troubling new variant emerging. Goma, city long affected by conflict in the Democratic Republic of the Congo, has become the epicenter of this outbreak. Healthcare facilities are overwhelmed, with many patients being children.
tensions rise as the WHO announces an Mpox outbreak. Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of Mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. The outbreak has been reported in 13 African countries. Scientists identify a new variant of Mpox this year. Nilikuwa najisikia kwanza kumwanzo, ninaanza sikia kichwa na luma, ninakusikia homa, ninakunasikia sawa na kama nasikia mishipa na kwa siku na kokota ya shingo. Mwisho nikaanza nasikia luwasho huko chini. Goma, long troubled by conflict in the Democratic Republic of the Congo, is now the epicenter of the Mpox outbreak. Goma hospitals are seeing a surge in Mpox cases. Par jour, ça dépend d'un jour à un autre. Il y a des fois on recevoir 9, on peut aller même à 15 ou bien 20 malades par jour. The current variant of Mpox is concerning due to its increased severity and deadliness. Doctors have stated that many of the affected patients are children. Et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. Donc c'est Moudia, chez Bouchagara, c'est aussi autour de Kibati, c'est à Kanyaruchinya. Donc vous notez déjà quand même qu'il y a une forte vulnérabilité dans les camps de déplacés. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies have warned of a severe shortage of testing, treatment, and vaccines for Mpox in Africa. There is a critical shortage of testing, treatment, and vaccines across the continent. These shortages are severely hampering the ability to contain the outbreak. We are calling for urgent international support to increase access to vaccine stocks and treatment options, and to scale up testing and alert investigation. Additionally, Sweden has reported an Mpox outbreak. Personen i Sverige som har bekräftats då vara smittad har fått både vård och förhållningsregler enligt gällande rekommendationer. Och vi bedömer att Sverige har en bra beredskap för att både diagnostisera, isolera och vårda personer med Mpox på ett säkert och bra sätt. This variant, known as Clade 1, is the first case identified outside Africa. Regeringen följer utvecklingen noga och har nära dialog med Folkhälsomyndigheten i frågan. Sverige har förstås också tät kontakt med relevanta aktörer både inom EU och internationellt. Sweden's Public Health Agency is coordinated with EU and international health organizations on the issue. The WHO has declared the rise in Mpox cases in Africa a global health concern. The WHO warns that the virus could potentially spread beyond international borders. With over 14,000 cases and 524 deaths in Africa this year, the outbreak already surpasses last year's numbers. And viewers, taking a very short break, but do not go anywhere. We are tracking more stories coming in. Former principal of R.G. Kar Medical College in Kolkata apprehended and grilled by the CBI team. 8 days on, parents of Abhaya await justice. Mamta protests against own administration. Stay tuned. And viewers, this is a Saturday morning, but we have a lot lined up for you. Like we told you, this is going to be a very, very newsy Saturday as IMA has called a 24-hour doctors and medical staff strike over the brutal rape and murder of a Kolkata doctor. That's going to be one of our top stories. Do not go anywhere. Much more coming up.
Hours after announcement of assembly polls in the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Congress Party has removed its state president Viqar Rasool Wani, and Tariq Hamid Kara has been given the new responsibility amid growing discontent against the former state president by the leaders from Jammu as well as Kashmir Valley. Stay tuned to Republic TV right after this short break. Good morning. We start this edition of Live this morning with the latest statement that's now coming in from Railways Minister Ashwini Vaishnav after the Sabarmati Express train derailed this morning. In fact, it was in wee hours somewhere between 2:30 a.m. To 2:35 a.m. that this train derailed. However, no casualties or fatalities have been reported. The statement that's coming from the Railways Minister, who says that the train's engine struck an object placed on the track, which resulted in derailment at around 2:35 a.m. Sharp hit marks were observed at the site and evidence has been sourced for investigation. The Union Railways Minister Ashwini Vaishnav also says that both the Intel Bureau and Uttar Pradesh Police are involved in the ongoing probe. Fortunately, no injuries to passengers or staff have been reported. A replacement train has been arranged to continue the journey to Ahmedabad. So, Railways Minister, who says that the train's engine struck an object that was placed on the track and that investigation has been launched. Let's go across to Gaurav. He's joining us live from the location where the incident happened. This is near Kanpur, where the train coaches derailed. Gaurav, the statement coming in from the Union Railways Minister says that there was an object that struck the track, that struck the train engine. Has he hinted at a possible sabotage in this incident? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्पॉट पर जहां पर जो उस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, यही वो ऑब्जेक्ट है। जो देखिए, साफ तौर पर यहां पर पुलिस को डिप्लॉय करा गया है, पुलिस खुद यहां पर मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट था जो कि पहले इंजन से टकराता है और उसके बाद ये पूरा हादसा होता है, जिसमें साफ तौर पर जो आप देखिए जो टायर्स हैं वो देख रहे हैं डिरेल हो चुकी है। 22 कोचेस जो थे वो डिरेल हुए हैं इस ऑब्जेक्ट के बाद। और इसके साथ ही एक और भी चीज़ है जो यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके लिए देखिए यहाँ पर खुद पुलिस को यहाँ पर लगा दिया गया है इसके पास ही, और इसी एंगल पर पूरी जांच अब हो रही है। आईबी और यूपी पुलिस को साफ तौर पर इसकी जांच के लिए लगाया गया है कि किस तरह से, क्या ये कोई साजिश तो नहीं कि इस तरह का ऑब्जेक्ट जो मिलना है। ये देखिए ऑब्जेक्ट वही है जिसको लेकर के लगातार सुबह से ही जिक्र हो रहा है कि ये यहाँ पर कैसे जो मिला है, और साफ तौर पर पटरी का हिस्सा लग रहा है टूटा हुआ, लेकिन ये पटरी कहीं से भी टूटी नहीं है। तो साफ तौर पर ये जांच का विषय है, और साफ तौर पर जो आईबी है और जो यूपी पुलिस है वो इस पूरे प्रकरण में अब इस विषय की भी जांच करेगी कि क्या इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मिलना किस एंगल पे जाता है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है इसके टकराने के बाद ही जो ट्रेन है साबरमती वो डिरेल होती है, और 22 कोचेज जो डिरेल होते हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जो खबर है वो नहीं मिली है। मामूली चोटें कुछ लोगों को मिली थी। फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो जारी है। और आपको बता दें जो सेकेंड लेन यहाँ पर ये है, इस पर ही मेमो ट्रेन को बराबर यहाँ पर लगाया जा रहा है, और उसके साथ जो पैसेंजर्स थे उनको यहाँ से कानपुर रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से मूव किया जा रहा है, और वहाँ से उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसके साथ ही उनको अपने जो गंतव्य है वहाँ के लिए रवाना किया जाए। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद से ही जैसी सूचना मिली थी कि एक ऑब्जेक्ट मिला है उसके बाद से ही, और खुद जो कानपुर के एडिशनल कमिश्नर हैं हरीश चंद्र जी, वो खुद मौके पर पहुंचे हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। और इस ऑब्जेक्ट को लेकर के देखिए खुद यहाँ पर सामने दिख रहे हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानपुर के हरीश चंद्र, वो हैं, उनके साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद है। ये घटनास्थल के विजुअल्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जो इस एंगल को लेकर के जाँच की जा रही है कि कैसे जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर मिला है और कैसे ये बीच में आता है, जिसके बाद जो ट्रेन है वो डिरेल होती है। ये तस्वीरें आपको कानपुर के पंकी इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं, जहाँ लगभग सुबह के 2:30 पर ये पूरा हादसा होता है, और जिसके बाद जो पैसेंजर्स थे उनका साफ तौर पर कहना है एक बड़ा धमाका हुआ है, और ट्रेन उसके बाद पटरी से उतरी है, जिसके बाद वो अपनी कोचेस पे थे वहाँ से वो गिरे हैं।
जैसे तैसे कुछ लोगों को फिलहाल मामूली चोटें ही आई थी, जिनको तुरंत जो आसपास के हॉस्पिटल्स थे उनमें उनका इलाज कराया गया है। लेकिन एक बड़ा जांच का विषय ये उठता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बीच में आया है। देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे कानपुर के एडिशनल कमिश्नर है हरिशन, जो कि मौके पर पहुंच चुके हैं और उनकी जो टीम है वो लगातार इस पूरे एंगल पे जांच कर रही है कि कैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाया गया है या यहाँ पर इसको रखा गया था। ये एक बड़ा जांच का विषय है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया और इसी एंगल पर अब जांच जो की जा रही है। Gaurav, stay with us. In fact, that's exactly the point I was coming to, how is it that this object was placed on the track? How is it that there was no security checks in place? Talk to us more about this possible sabotage angle that is now being probed by the INB and the UP police. देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये एक बड़ी चूक भी कह सकते हैं, क्योंकि किस तरह से ऐसा होता है कि जब लगातार ये जो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए तो रेलवे ट्रैक्स हैं, इन पर आसपास कोई बैरिकेडिंग्स भी नहीं होती है, कोई किसी तरह की बाउंड्रीज भी नहीं है। ये खुला है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ और जा सकता है। साफ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये रास्ता है जिससे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है और इन ट्रैक्स पर कुछ भी रख सकता है। ये एक बड़ा जाँच का विषय है। और उसके बाद आपको बता दें, जिस तरह से इस पूरे हादसे के बाद लगातार जो RPF की टीम्स थी, यूपी पुलिस की टीम्स थी, वो मॉनिटर कर रही थी और उसी के साथ इस तरह का ऑब्जेक्ट मिलना एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि क्या इस किसी बड़ी साजिश का भी इसमें जो संभावना है वो भी जताई जा सकती, जिसके बाद IB को इसकी रिपोर्ट दी गई और IB और यूपी पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया। ये ऑब्जेक्ट है जिसके पास देखिए खुद जो ACP हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया, उनके साथ भारी पुलिस बल है। यही वो ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर के लगातार जाँच की जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसे मिला है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसे आता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक ट्रैक का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा है, लेकिन इस पूरे ट्रैक में You do stay with us. Yes, let's tell our viewers once again that Ashwani Vaishnav, the Union Railways Minister, has issued a statement. He says that the INB and the UP police have begun probing as to what really happened. This while a sharp object was found at the railway track where the Sabarmati Express derailed. In fact, listening to the voices of the passengers who were travelling in this Sabarmati Express. क्या हादसा हुआ था, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? आप तो ट्रेन में थे उसमें। ट्रेन में थे, इतना तेज आवाज़ आया कि जैसे कि ये रोड पर नहीं, पटरी पर नहीं चल रही, रोड पर चल रही गाड़ियाँ। और इतना 220 के 200 लगभग 2:20 पे हुआ घटना। 90 की स्पीड गाड़ी रही होगी और इतना ज़बरदस्त पब्लिक एक पर एक हो गए। उसके बाद गाड़ी खड़ी हुई, एकाएक ब्रेक रुक गया, उसके बाद पब्लिक बाहर निकली। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है और जो रेलवे की तरफ से टीम्स हैं वो पहुंच गई हैं और राहत बचाव का कार्य बराबर किया गया। जो घायल थे उनको भी इलाज प्रॉपर मिल रहा है। प्रॉपर मिला है और लगभग 3 बजे प्रशासन आ गई है। क्या हुआ? एक को लेके गए थे, उसका सर फट गया था, दवा खाने लेके गए, उसको कम से कम 1000-2000 रुपये लगा के आए। यहाँ पर जो लोग आई थी, टीम्स आई थी, वो इलाज नहीं लेके गए थे, 2:20 पर तुरंत लेके गए उसको। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन की टीम है उन्होंने एम्बुलेंस भी अरेंज करा लेके आए, जब दोबारा लेके गए एम्बुलेंस वाले, अभी दोबारा अभी 5 बजे। शुरुआत में इलाज आप लोग लेकर गए? हाँ, हम लोग अपने पैसे और हमारे पैसे निकाल लिए। जो पुलिस वाले जो यहाँ 12,000 रुपये गायब हो गया। कई लोगों की सूचना आ रही है, क्या एक्सीडेंट के बाद लूटपाट भी हुई है? हाँ, लूटपाट हुई है और मोबाइल भी 10-15 मोबाइल गायब हुई है। And let's now move on to news that we are tracking from Maharashtra's Nashik, where Section 144 has been imposed. In fact, internet remains clamped, suspended in the region as a result of stone pelting, which ensued as a result of. In fact, this stone pelting happened while there was a protest march that was being held in solidarity with the Bangladeshi Hindus. So Section 144 that's been imposed, internet that's been suspended after clashes and stone pelting during a protest march that was being held in this region for the Hindus in Bangladesh, as there is clearly no end to the atrocities against Hindus in the country. Let's go across to Satya Prakash, who's joining us live right now. Satya Prakash, how is the situation in Nashik looking at present? Internet remains suspended. Section 144 has been imposed. But talk to us about who are these miscreants who indulged in stone pelting while there was a march being carried out for the Hindus in Bangladesh. देखिए समीक्षा, कल दोपहर की घटना है जब ये हिंदू संगठन मार्च निकाले थे। उस समय कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद दोनों समुदाय की तरफ से जम के पत्थरबाजी हुआ। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें पुलिस वाले भी हैं। फिलहाल पूरा मामला अभी शांत है
पुलिस देर रात सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया था। जिस इलाके में ये हुआ था घटना, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया है। धारा 144 लगाया गया है, लेकिन इंटरनेट नहीं बंद किया गया है। देर रात ही पुलिस तरफ से स्टेटमेंट आया कि सिचुएशन पूरी तरह से शांत है। जो हुआ था पूरी तरह से अभी शांति हो गया है। कोई अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में। सुरक्षा व्यवस्था के देखते हुए 144 लगाया गया था और अभी भी जो है पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है। पुलिस का कहना है कि सिचुएशन पूरी तरह शांति है, क्योंकि जिस तरह से कल हिंदू संगठनों ने बंद किया था, बंद का बुलाया था पूरे जो नासिक में, जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदू लोग साथ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ वहाँ पे मार्च निकाला जा रहा था, उसी समय ये घटना हुई और दोनों समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में काफी पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, कुछ आम नागरिक भी घायल हुए हैं। तो फिलहाल स्थिति जो है सामान्य है, नियंत्रण में है। पुलिस का कहना कि सुरक्षा व्यवस्था पूरे इलाके में बढ़ा दिया गया है। जी। All right, Satya Prakash, thank you for the moment. So Satya Prakash tracking details of what exactly transpired in Nashik when stone pelting happened while a solidarity march was being carried out for the Hindus in Bangladesh, as there has clearly been a rise in atrocities against Hindus in Bangladesh after the interim government has taken over. Section 144 has been imposed in Maharashtra's Nasik area. This after violence broke out. Cars were vandalized. Stones were pelted. The police had to fire tear gas to disperse the crowd. The incident happened after stones were pelted on a protest organized by Hindu groups over the atrocities against minorities in Bangladesh. Many people are reported to have sustained injuries. Police forces have been deployed in the region to control the situation. Hindu organizations have been staging protests demanding the safety of Hindus. नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा है। BJP's Nupur Sharma called for an end to genocide of Hindus in the neighboring country. Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा. Hindu lives matter. The situation in Bangladesh has turned grim. What started as an anti-quota movement has turned violent. Public properties have been vandalized. Sheikh Hasina forced to resign as Prime Minister and flee the country. Attack on minorities. While India stands for the minority groups in Bangladesh, will people in Bangladesh stand up for their own? Let's now shift focus to news that we are tracking from Rajasthan's Udaipur, where Section 144 has been imposed and internet has also been snapped in Udaipur and neighbouring regions. In fact, this note after a stabbing incident was reported from Udaipur. We spoke with the superintendent of Udaipur, who says that investigation has been launched and that strict action is going to be initiated in this particular case in which a government school boy, a 10th class boy, was seen stabbing his fellow classmate. दो स्कूली छात्रों के आपसी विवाद के बाद में चाकूबाजी की घटना हुई, लेकिन सड़कों पर भीड़ जो निकली थी वो माहौल खराब करने के लिए निकली थी और उदयपुर जैसे शांत शहर का माहौल खराब करने के लिए जब भीड़ निकली तो पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की। मुस्तैदी के साथ पुलिस अलग अलग हिस्सों में, उदयपुर के अलग अलग हिस्सों में गश्त भी कर रही है और जहां जरूरी सख्ती है वहां सख्ती भी कर रही है। मेरे साथ में योगेश गोयल हैं जो कि अभी एसपी हैं उदयपुर के। सर, अभी हालात क्या हैं? देखिए, अभी पूरे शहर में सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी की बात करो तो 144 सब जगह इम्पोज कर दी गई है। जगह जगह जहाँ भी मिक्स्ड इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर हमारी पुलिस पिकेट्स हैं, पुलिस मोबाइल पार्टीज़ हैं। लोगों को हम लगातार समझाइश कर रहे हैं कि अफवाहों के ऊपर कतई ध्यान ना दें।
जो इस घटना में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर जो संदिग्ध लोग थे उनको हमने डिटेन कर लिया है। उनके खिलाफ हम जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। जो बच्चा है उस बच्चे को तुरंत मेडिकल एड दिलवाई गई है और जो बेस्ट मेडिकल एड उसको मिल सकती है उसको हॉस्पिटल में दिलाई जा रही है। बच्चे को कहीं ब्लड की आवश्यकता हो तो इसलिए भी उसके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने हमारे जवानों को तैयार कर रखा है कि किसी भी तरह से उसको ये ब्लड की कहीं दिक्कत ना हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी और समस्या ना हो। इसके लिए डिविजनल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब ने भी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट मेडिकल एड्स है उसको हम दिलवा रहे हैं। रात्रि में हमने सभी जगह व्यवस्था माकूल रहे, इसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट हमने नाइट में किया है। हमें हेडक्वार्टर से एडिशनल फोर्स भी मिल गई है और अधिकारी भी मिल गए हैं और हम लगातार राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर बनाए हुए हैं और गृह राज्य मंत्री जो हैं जवाहर सिंह बेड़म, उन्होंने कहा है कि हम जितनी भी जो भी फोर्स अप्लाई कर रहेंगे वो यहाँ पे भिजवाई जाएगी और आसपास के इलाकों के जो पुलिसकर्मी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, हमें जो आसपास के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो पहले उदयपुर में रहे हैं, जिनको उदयपुर का अनुभव है, वो काफ़ी अधिकारी और इसके अलावा आरएसी की लगभग 5 कंपनीज और लगभग 200 आदमियों का जाब्ता हमें मिल चुका है। उनको हम आवश्यकता के अनुसार रात्रि में और दिन में लगातार डिप्लॉय कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई हमने सख्त ये मैसेज दिया है कि कहीं पर भी कोई अगर बदमाशी करता है या माहौल को ख़राब करने करता है या लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करता है, हमने मैसेज क्लियर कर दिया है कि हम इसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो अफवाहें सोशल मीडिया पे चल रही हैं बच्चे को लेकर के, कोई कह रहा है कि डेथ हो गई है, कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, कोई कह रहा है कि आईसीयू में है, प्रेजेंट का स्टेटस उसका क्या है? देखिए, एज ऑन अभी राइट नाउ वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। उसका सर्जरी हो गया, सर्जरी होने के बाद वो कार्डियक डिपार्टमेंट में आईसीयू में है और डॉक्टर्स की मेडिकल टीम लगातार उस पर निगरानी रखी हुई है और जो जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है उसकी स्थिति पहले से बेटर हुई है। All right, so that's the statement that's coming in from the Udaipur SP, who says that the child who was injured in this knife attack is said to be stable. Not just that, he says that internet is going to remain suspended for the next 24 hours and Section 144 will also be in place following the tensions and unrest that still prevails in Udaipur following the stabbing incident. A class 10th student was stabbed by another student at a government-run school in Udaipur. The motive behind the attack is still unclear, leaving authorities and the community searching for answers. The accused has been detained by the police. पूरे शहर में सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी की बात करो तो 144 सब जगह इम्पोस्ट कर दी गई है। जगह जगह जहाँ भी मिक्स्ड इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर हमारी पुलिस पिकेट्स हैं, पुलिस मोबाइल पार्टीज़ हैं। लोगों को हम लगातार समझाइश कर रहे हैं कि अफवाहों के ऊपर कतई ध्यान ना दें। जो इस घटना में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर जो संदिग्ध लोग थे उनको हमने डिटेन कर लिया है। उनके खिलाफ हम जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। जो बच्चा है उस बच्चे को तुरंत मेडिकल एड दिलवाई गई है और जो बेस्ट मेडिकल एड उसको मिल सकती है उसको हॉस्पिटल में दिलाई जा रही है। Communal tensions have flared in the Madhuban area of Rajasthan's Udaipur. Members of several Hindu right groups gathered and set fire to at least 3 cars parked in a garage. The police officers are trying to extinguish the fire. The group also engaged in stone pelting. In response to the escalating unrest, the police has imposed Section 144, which prohibits the assembly of people to maintain law and order. As the situation intensified, most markets were closed in Old Udaipur city. The internet has been suspended for 24 hours. 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। Police and security forces have been deployed to ensure law and order in the state.
Chief Minister Bhajanlal Sharma will closely monitor the situation in Udaipur. Meanwhile, SP Yogesh will conduct a flag march with a heavy police presence. Authorities are working diligently to restore peace and stability in Udaipur. Let's now move on to what's happening in the valley. Hours after the Election Commission announced dates for the J&K Assembly polls, the Congress has announced replacement of the J&K Congress chief Vasool Wani, which once again highlights the growing divisions within the party. In fact, Vasool Wani, the J&K Congress chief, has now been replaced by Keshav Mahato Kamlesh. We'll go across to Gursimran also. He is joining us live right now. Gursimran, it's once again in focus that there are growing divisions within the Congress party. Talk to us more about this new Congress chief who has replaced Vasool Wani. Rasool Wani, beg your pardon. Yes, Samiksha, there have been two replacements, Keshav Mahato in Jharkhand, and it is Tariq Hamid Kara for Jammu and Kashmir, the replacements which the Congress party has done. This has come a couple of hours after the announcement of the polls in Jammu and Kashmir that the Congress has decided to remove its existing, the incumbent, the chief of the party, Viqar Rasool Wani. Viqar Rasool Wani was no doubt the one who has excelled when it comes to the Lok Sabha polls, as he managed to give a major lead to the Congress party, but he was not acceptable to the many of the senior Congress leaders. The reason being his seniority as well as his unacceptability in the party cadres. The party cadres, there was a growing discontent for him, and that was why roughly 25 leaders of the Congress party met the Congress High Command in the national capital in last couple of weeks in the month of August itself, and then they have conveyed the party leadership that it will not be right if the party goes to the assembly polls with the same leadership that has not been able to win a single seat. Though he's a good leader and he should be accommodated, and that's why it was decided that he be made the special invitee of the Congress Working Committee but be removed as the chief of the Congress party. Now the command has been given to the senior leader Tariq Hamid Kara, who has been one of the veteran leaders of the Congress party and is believed to have his contact in all the sections or all the groups of the party in which the party was divided during the leadership of Viqar Rasool Wani. Now the change, it has to be seen how it spans out, because after the change, what the first task will be to finalize the list of the candidates. It has to be seen how things will go and whether this discontent that was against Viqar Rasool Wani will continue to monger against Tariq Hamid Kara, or it will come to an end, Samiksha. Well, that's right, Gursimran. We leave it at that. But the question here also being that whether Congress be able to keep its flock together until the J&K Assembly polls or not. For now, we leave it at that, Gursimran. We'll head into a very short break for now. But when we come back, we will continue with a special coverage. Our top focus remains justice for Abhaya, as the Indian Medical Association is on a 24-hour strike starting today. And Sandeep Ghosh has been apprehended by the CBI in connection with the rape and murder of 31-year-old doctor. 8 days on, India demands justice for Abhaya. We start this edition with the international news that we are tracking amid the escalating tensions in the Middle East region. Foreign ministers of UK and France held a meet in Israel to discuss ceasefire and hostage deal. In fact, note this when US State Secretary Antony Blinken is also on a state visit to Israel to broker a ceasefire deal. As the Israel and Hamas war rages on, efforts are underway to de-escalate the war from expanding. On Friday, the British and French foreign ministers made a joint trip to Israel where they met with Israeli ministers. British Foreign Secretary David Lammy called it a dangerous time for the Middle East. International mediators are also holding talks in Qatar to reach a ceasefire deal. Release of hostages also remain a key topic. We think this is the last chance to bring them home now. While Hamas did not participate in the talks directly, it has accused Israel of adding new demands to a previous proposal.
The war began in October last year following a deadly attack on Israeli army bases and civilians by the Hamas terrorists. Hamas terrorists killed around 1,200 people and abducted over 250. More than 100 of them have been released, but over 100 are still believed to be in Hamas's captivity. Now news from Thailand. Paetongtarn, the youngest daughter of former Prime Minister of Thailand, has been elected as the country's new Prime Minister with 319 confirmed votes in her favour. She has become Thailand's third leader from the influential family following her father's controversial tenure and return from exile just last year. As the parliamentary elections in Thailand conclude, Paetongtarn Shinawatra, daughter of the former leader Thaksin Shinawatra, has been elected. Right now, of course, today I feel very honored and I feel very happy to do my best in every day and in every opportunities that I have. I think that's make me feel like, of course, there's a lot of things going on around me, but if I always do my best and always think about what is happening right now, right here in front of my face, I will be fine. Paetongtarn is now Thailand's third leader from the Shinawatra family, following her father, who was ousted in a coup before returning from exile last year. She secured 319 confirmed votes with 145 against her and 27 abstentions. Paetongtarn was the sole nominee and obtained a majority of the votes in the parliament. This election follows a significant ruling by Thailand's courts which removed the former Prime Minister Srettha Thavisin from office due to an ethical violation. ผมเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยการอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นทำตัวเป็นที่ขัดแย้งของทุกๆคนนะครับก็ The court decision has also disrupted the political landscape, especially after the main opposition party was ordered to dissolve just a week ago. The petition against Srettha was perceived as a move favouring a pro-military political party within his coalition government. The Constitutional Court ruled that Srettha, a real estate tycoon and relative newcomer to politics, had violated ethics rules by appointing a lawyer with a criminal record to his cabinet. As the new Prime Minister was elected at a time of heightened scrutiny and shifts in power dynamics, the country now watches closely on how she will face the pressing issues. Now, the third round of the India-Japan 2+2 Foreign Defence Ministers meeting is scheduled for 20th of August with Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, who will be representing India. In fact, this key dialogue highlights the growing defence cooperation between the two nations, which is increasingly significant given the rising influence of China in the Indo-Pacific region. This meet also follows a series of important agreements that will be inked between India and Japan, particularly in the defence sector. The Ministry of External Affairs announced that the third round of the India-Japan 2+2 Foreign Defence Ministers meeting will be held on the 20th of August. The third round of India-Japan 2+2 Foreign and Defence Ministers meeting is scheduled to be held in New Delhi on 20th August 2024. The first and second rounds were held in 2019 in New Delhi and in 2022 in Tokyo, respectively. From the Indian side, this round will be attended by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. From the Japanese side, Honorable Foreign Minister Ms. Yoko Kamikawa and Honorable Defence Minister of Japan Mr. Minoru Kihara will attend. Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar are all set to represent the Indian side. The first edition of the dialogue was held in 2019, while the second one took place in Japan in the year 2022.
Japan's Foreign Minister Yoki Kamikawa and Defense Minister Minoru Kihara will be in New Delhi to attend this integral meeting. This 2+2 dialogue comes at a time when Chinese ascendancy in the Indo-Pacific continues to be on the rise. India and Japan have signed various key agreements in the area of defense. Here's some of them. India-Japan Defense and Security Partnership forms an integral pillar of bilateral ties. India-Japan defense exchanges have gained strength in recent years due to growing convergence on strategic matters, and its significance is growing from the common outlook on issues of peace, security, and stability of the Indo-Pacific region. As India and Japan prepare for this critical defense dialogue, all eyes are on the new agreements or strategic shifts that might possibly emerge. Let's now move on to other stories that we are tracking from across the globe. Amid tensions that have been on the rise over Mpox cases, the World Health Organization has declared a global health emergency following a significant outbreak of Mpox. In fact, note that the disease has now been reported in at least 13 African countries, with a troubling new variant that is now emerging. In fact, Goma, a city long affected by conflict in the Democratic Republic of Congo, has now become the very epicenter of the Mpox outbreak. Tensions rise as the WHO announces an Mpox outbreak. Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of Mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. The outbreak has been reported in 13 African countries. Scientists identify a new variant of Mpox this year. Nilikuwa najisikia kwanza kumwanzo, ninasikia kichwa na luma, ninakusikia homa, ninakusikia sawa, na pia nasikia mishipa na kwa siku na kokota ya shingo. Mwisho nasikia luwasho huko chini. Goma, long troubled by conflict in the Democratic Republic of the Congo, is now the epicenter of the Mpox outbreak. Goma hospitals are seeing a surge in Mpox cases. Par jour, ça dépend. D'un jour à un autre, il y a des fois on recevoir 9, on peut aller même à 15 ou bien 20 malades par jour. The current variant of Mpox is concerning due to its increased severity and deadliness. Doctors have stated that many of the affected patients are children. Et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. Donc c'est Moudia, chez Bouchagara, c'est aussi autour de Kibati, c'est à Kanyaruchinya. Donc vous notez déjà quand même qu'il y a une forte vulnérabilité dans les camps de déplacés. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies have warned of a severe shortage of testing, treatment, and vaccines for Mpox in Africa. There is a critical shortage of testing, treatment, and vaccines across the continent. These shortages are severely hampering the ability to contain the outbreak. We are calling for urgent international support to increase access to vaccine stocks and treatment options, and to scale up testing and alert investigation. Additionally, Sweden has reported an Mpox outbreak. Personen i Sverige som har bekräftats då vara smittad har fått både vård och förhållningsregler enligt gällande rekommendationer. Och vi bedömer att Sverige har en bra beredskap för att både diagnostisera, isolera och vårda personer med Mpox på ett säkert och bra sätt. This variant, known as Clade 1, is the first case identified outside Africa.
Regeringen följer utvecklingen noga och har nära dialog med Folkhälsomyndigheten i frågan. Sverige har förstås också tät kontakt med relevanta aktörer både inom EU och internationellt. Sweden's Public Health Agency is coordinated with EU and international health organizations on the issue. The WHO has declared the rising mpox cases in Africa a global health concern. The WHO warns that the virus could potentially spread beyond international borders. With over 14,000 cases and 524 deaths in Africa this year, the outbreak already surpasses last year's numbers. And as India awaits justice for Abhaya, there is a strong clamour demanding President's rule to be imposed in Bengal. That's one of our top focus areas. We head into a very short break, but when we come back, we'll get to a live coverage as nationwide protests by doctors continue demanding justice for Abhaya, former principal of the college where the doctor was raped and murdered, is now under the CBI scanner. 8 days on, our parents of Abhaya still await justice. Mamta protests against own administration. And in business news that we're tracking, in a big boost to urban infrastructure, the Union Cabinet has given green light to 3 major metro rail projects across Karnataka and Maharashtra. In fact, these projects include the Bengaluru Metro Phase 3 expansion, the Thane Integral Ring Metro Rail Project, and the Pune Metro Phase 1 extension as well, with a combined estimated cost of more than 30,700 crore rupees. The Union Cabinet has approved 3 metro rail projects in Karnataka and Maharashtra. आज उसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 3 और मेट्रो प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए और जैसा आप देखते हैं कि एस्पिरेशनल भारत है, लोग बहुत फ्लाइट से आज ट्रैवल करना चाहते हैं और लॉन्गर डिस्टेंसेस में फ्लाइट ट्रैवल करना उचित भी है, तो इसीलिए उसी क्रम में आज 2 और नए एयरपोर्ट्स का भी 2 नए एयरपोर्ट फैसिलिटीज का भी आज अप्रूवल हुआ है। The projects include the Bangalore Metro Phase 3 expansion, the Thane Metro Rail project, and the Pune Metro Phase 1 extension. The combined estimated cost of these projects is 30,765 crore rupees. This decision is expected to enhance urban connectivity and infrastructure development in these states. For the Bangalore Metro Rail project Phase 3, the Cabinet has sanctioned 2 corridors with a total project cost of rupees 15,611 crores. The first corridor will extend from JP Nagar 4th phase to Kempapura, featuring 21 stations. The second phase will connect 9 stations. Both the corridors are projected to be operational by 2029. The second project, the Thane Integral Ring Metro Rail project, is estimated to cost 12,200 crore rupees. This project will link key areas, including Dongripada and 3 additional locations. It will significantly enhance urban transit in the region. The third project, the Pune Metro Phase 1 expansion, will extend southwards from Swargat to Katraj. With a total project cost of rupees 2,954 crores, it is also slated for completion by 2029. पुणे आज अगर हम देखें 75 लाख पॉपुलेशन का है और पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो देश के टॉप 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में आज शामिल है। बहुत ही तेजी से इसका विस्तार है क्योंकि पुणे में एजुकेशनल फैसिलिटीज, बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र है और इंडस्ट्रियल सेंटर भी बहुत बड़ा है। इसीलिए पुणे में मेट्रो ईस्ट और वेस्ट, एक ये फेज था, एक ये दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन दूसरी, और अब इसका एक्सटेंशन आज अप्रूव हुआ है जिससे पुणे को एक अच्छी फंक्शनल मेट्रो फैसिलिटी मिलेगी। In addition to these, the Cabinet has also approved 2 new civil enclaves at Bagdogra Airport in West Bengal and Bihta Airport in Patna. The Bagdogra project will cost around 1,500 crores
and include the construction of an apron with 10 parking bays for 8 321 type aircraft. The Beta Enclave, with an estimated cost of rupees 1413 crore rupees, and will feature 10 parking bays suitable for A321, B737-800 and A320 type aircraft. And with that, it's a wrap on this edition of our broadcast. When we come back, we'll get you all the top news breaks on Live and Breaking.